Okay, a very good afternoon, dear students. Okay, so previously we have already started the second unit, that is linear data structures using sequential organization. Okay, means in which we have cleared all these points, like what is meant by data structure. These are the two parts: primitive data structure, non-primitive, in which built-in data structure, that is integer, float, character, double, pointer. These are the built-in. And what about non-primitive? Again, there are two parts: linear data structure and non-linear. In linear, having array, stack, queue, linked list. This point we have seen. Okay, the non-linear data structure, that is tree, graph, and files. Okay, the hub part of data structure, that is non-linear, that we'll see in next semester. Okay, so now we are focusing on only a linear data structure. Okay, fine. So next will be this is the type of data structure that we have seen. Okay, so this is one important part, that the application of actually linear data structures are, these are the application. The first one was this what different types of data structure we are going to concentrate. ये हमारा array है. Graphical representation of array is what everyone clear, that we have already started. It is a one dimensional array. So element we are storing, just concentrate on gray color, that is 0 to 9 values are there, that is the indices of that array. Okay, and we are storing the value into that blocks. Okay, so array concept is a blocking concept, means we are storing the element into the consecutive memory allocation, continuous memory allocation, and the data accessing from that indices only. Okay, so this is the first index, this is the last index, means here we are storing the total number of element is 10. Just concentrate in first graphical representation of array, that is array length is 10. Okay, मतलब total number of elements हम कितने store करेंगे, the 10 elements we are going to store into that array. Okay, और array का representation किसके through होता है, indices through होता है. So this point we have already cleared on previous I guess 10 to 15 lectures we are putting on array data structure. Okay, so I hope everyone is clear this part. Fine. So next one will be next point, that is yes, this is the second type of array, that is what, there is a stack data structure. Okay, ये जो आपको GUI दिख रहा है, इसमें क्या है, this is a stack. Stack is one type of array. These are the application of this linear data structure. That is array हम लोग कहाँ कहाँ पे use कर रहे हैं. This is what actually, which type of array, this is which array, this is a vertical data structure. Actually array को ही हम लोगों ने vertically represent किया है, उसको एक ही pointer है, that is टॉप. टॉप से ही हम लोग वैल्यू को पुश कर रहे हैं और वहां से वैल्यू को क्या करते हैं, पॉप करते हैं. मींस दिस इज अ वन टाइप ऑफ एरे ही है, सिर्फ उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली देखा है, यहाँ पे हम लोग वर्टिकली देख रहे हैं. तो यहाँ पे वी आर पुशिंग द एलिमेंट इनटू स्टैक एंड पॉपिंग फ्रॉम इट. ओके, सो एक ही पॉइंटर होता है, उससे ही एलिमेंट हम लोग डालते हैं, उससे ही रिमूव करते हैं, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो टिपिकली एरे जैसे ही होता है. So this is very important. The element store in continuous memory allocation. Okay. So next will be again this is one application, that is we can say that suppose if you want to, if you play the chess game, or this is what I want to store the 8 queen problem, 4 queen problem, what are problem. I hope everyone clear that puzzles, right? So there is just see the next matrix, that is 4 by 4 matrix. This is the number of rows and these are the number of columns. Okay, 0 1 2 is number rows are there, and columns will be 0 1 2 3 columns are given. Okay, and these are the values we are going to store into that matrices. Okay, so likewise this is the different representation of array that we have seen previously. Fine, and this is the one type of data structure. Just see in this GUI there will be what we can say, this is the multiplex theater, we can say that. Okay, an element will be stored like this, that is just concentrate here in that next GUI. This is a queue data structure. Okay, so queue में भी हम लोग data store करते हैं, वो किस way से store होगा. Again there is a horizontal data structure, means हम लोग एक side से element insert करते हैं और दूसरे side से element remove करते हैं. So how it is possible, we'll see one by one. Okay, so this is what the applications of linear data structures. Okay, so I hope everyone clear this. Fine. Next one will be, we are going to see this. We have seen the declaration of arrays also. This point we have covered previously, but just I am
quoting it again, the one dimensional array, that is only just concentrate on declaration of arrays. That is it audible, dear student? There is no any problem, right? No, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, so Yes, ma'am. declaration of, yes, declaration of array means what? Again, there is a data type of that array, name of the array, and the array means what? Collection of similar type of data, and the square bracket given the array size. Okay, that point we have clear previously. Again, we are revising it here only. So for example, is the type is, let's say I'm talking about the balance is the name of the array, and the double is a type of that array, and the 10 means the dimension says that we are using array. Actually हम लोगों ने ये square brackets भूल गए तो वो normal variable हो जाएगा, but when we are giving the square bracket here means what, we are using the array variable. और कितने total number of values store करेंगे? 10 total number of elements we are going to store into array. Okay, that point we have clear. Okay, the initialization of array also we have seen using particular example we have implemented in online GDB also. So you have cleared all these points. Again I'm revising the initializing the array. Again, how we are going to initialize the array? Array को हमें directly we are going to pass the value into that array. User define array भी कर सकते हैं. Secondly, हम लोग array में value भी pass कर सकते हैं. Okay, so यहाँ पे देखो, for example, double same variable we are going to take. Double is a type of that balance variable. How many variable we are going to store? That is 5, and we are passing equal to sign, then in curly bracket we are directly passing the element into that array. This is a possible it only a array data structure. I hope everyone is clear. हम लोग initialize कर रहे हैं array में, run मतलब हम लोग user define program नहीं कर रहे हैं, जिसको hard coded code बोला जाता है, कि array की value हमने directly program में भी directly मतलब array में हम लोग pass भी कर सकते हैं. So similarly here this is called as a initialization of array, means name of the array, size. ये देखो फर्स्ट, इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने array में 5 साइज दी है. नीचे देखो सेकंड एग्जांपल, डबल बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे साइज मेंशन नहीं की है, फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा विदाउट गिविंग द साइज इक्वल टू ऑपरेटर, एंड कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग डायरेक्टली उस वैल्यू को पास कर सकते हैं. तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजिंग अ array. Okay, and the next one will be that we have cleared this point. For example, just concentrate on example on yellow color, that is we are accessing the element randomly from that array. means balance ये variable के fourth location में, array का नाम balance है, उसमें fourth location का value मैं directly access कर सकती हूँ. So this is the biggest advantage of array data structure, that is we are going to access any element from array data structure randomly. Okay, randomly हम लोग एक कौन सा भी एक एलिमेंट को पिकअप कर सकते हैं. Why? Because we know that array elements store in continuous memory allocation. Okay, so this point is everyone cleared. Okay, so continuous memory allocation में जो data stored होता है वो easily हम लोग access कर सकते हैं, क्योंकि we know that from where to where we are going to store that array. means 0 location से 100 location तक मैंने element store किए हैं. I know that, so I can easily pick up that value. It's possible only a array data structure. Array data structure का सबसे biggest advantage है that is we are accessing the element randomly. Okay, that point we have clear. Okay, so again this is a pictorial representation of an array. That is again we have seen that example, that is balance 0 location में 0 1 2 3 4 these are the indices, 1000 2.0 3.4 7.0 50.0 these are the values that we are storing into balance array. Okay, and we are accessing just previous example that if I want to display cout balance of 4, तो वो क्या value display करेगा 50.0. means randomly we can access the element from that array. Okay, this point we have already covered in previous I guess 15 to 14 lectures. I hope everyone is clear this. Fine. Next, so accessing an array element, that point again we have completed that. Just I want to access, just concentrate on the yellow highlighted example, that is double salary equal to balance of 4. means we are directly accessing the balance
array value, that is fourth location value, that is 50.0, means मैं directly cout balance of 4 मैंने लिखा तो directly मुझे वो 50.0 value display कर देगा. So this is the biggest advantage of a array, okay, that we have seen previously. Fine. So this is one type of example in array, that is we have seen that how we are going to accessing that array, means how we are going to scan the total array, is how to display the element from that array, means we require the for loop here for scanning purpose and display purpose. So dear students, I am writing this code in C language, don't bother about it. We have already cleared the concept in C++ language. Okay, this is the one example that just concentrate on integer main. I am declaring one variable, that is a of 10. Okay, size variable. Then I'm asking how many elements you want to enter into array. पहले array की total number of element कितने डालने हैं उसको scan करना पड़ता है. Then I want to enter the element into array, means we have to use the best loop statement, that is for loop. Okay, for everyone clear that now. For I equal to 0, I is less than size I plus plus, then we are going to scan that element. Scan की जगह पे आपको क्या करना है, सी इन करना है, और printf की जगह पे सी आउट. So I'm not going to explain scanf printf here now. It's a C language code, but we have already cleared on C++. Okay, fine everyone. There is no any doubt because we have cleared this point. I'm just revising today. Yes, clear? Cleared, or Yes, ma'am. please give me the acknowledgement. Okay, thank you so much. Okay, and this is the output that we are displaying the element of an array. Okay, fine. So we have cleared the multi-dimensional array also. So no need to explain now multi-dimensional array. It's required to explain the multi-dimensional array. We have cleared it very properly. Clear? So size 1 मतलब जितने dimensions आपको बढ़ाने हैं, size first bracket, second bracket, up to the आपको कितने n dimensional means n number of dimensions you can execute or you can implement. वो किसका blocking के अंदर blocking. These points we have clear previously. Yes, dear student. Multi-dimensional array हमारा हो चुका है. Okay, thank you so much. Okay, so again we are revising two-dimensional array in C, that is we have yesterday we have implemented the program of matrix. That is the one important part, that the type of that array, the syntax of that two-dimensional arrays, उसका type. Then array name, X is representation of number of rows and Y represents number of columns, that we have clear previously. Yesterday's practical we have cleared this. This is the combination of 3 by 4 matrix. 3 by 4 means number of rows will be 3, row 0, row 1, row 2, and the column will be column 0, column 1, column 2, column 3. Means a two-dimensional matrix. Specifically matrix it is called as a two-dimensional matrix. There is only two dimensions are there, number of rows and number of columns are there, and the concentrate on first block, that a of 0 0 means first row में, zero location में, first column में first value हम लोग store कर रहे हैं. Then second, always remember that value will be filled up by rows only, not for columns. Always remember that रो पहले फिक्स करता है. पहले a of 0 0 में फर्स्ट वैल्यू जाएगी. a of 0 मीन्स 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को. 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट कॉलम. देन a of 0 रो फर्स्ट, कॉलम 2, row first, column 3. So likewise row wise value will be filled up. That we have seen that two for loop yesterday. For I equal to 0, I is less than m, I plus plus. For j equal to 0, j is less than m, j plus plus. उसके अंदर हम लोगों ने लिखा था c in a of ij. So these two for loop means पहले outer for loop हमेशा fixed होता है और inner loop change होता है. That we have cleared this concept multiple times. So you just understand that how a two-dimensional array will be fill up. Okay, first हम row को fix करते हैं and column wise value fill up करते हैं. I hope everyone is clear. So second row में देखो a of 1 0 means row 1 है, column 0 है, column 1 that is row 1, column 1, column 2 that is row 1, column 2, column 3, row 1, column 3. So likewise we are going to store the value. Okay, this is the representation of two-dimensional array. Okay, likewise we are going to see the two-dimensional array को हम लोग कैसे represent करते हैं, उसको initialize कैसे करेंगे. Initializing the two-dimensional arrays here, that is for example integer type का a of 3 of 4. We are taking one variable here equal to, in curly brackets we are directly pass the value
3 rows means what? First row, just concentrate on 0 1 2 3 ये हमारा first row है, 4 5 6 7 this is second row, 8 9 10 11 this is third row, and the column will be 0 4 8 first column, 1 5 9 second column, 2 6 10 third column, and 3 4 11 is fourth column. So likewise we can directly pass the matrix value in on given the array. Okay, 2-dimensional array में हम लोग directly value pass कर सकते हैं this equal to operator and give the value into curly brackets. Okay, so this is the concept of what? Initialization of 2-dimensional arrays or matrix we can say. Okay, then accessing the 2-dimensional array elements, again it's very easy part, that is again we can accessing the value directly. A of मैं randomly access कैसे कर सकती हूँ? A of 2 of 3 मीन सेकेंड रो में का जो थर्ड वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल में सेकेंड रो का थर्ड वैल्यू, सेकेंड रो थर्ड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जांपल A of 2 3, A of 2 3 मतलब 0 1 2, सेकेंड रो और उसकी वैल्यू 3 मींस इन आवर एग्जांपल हम लोगों ने क्या बोला है, सेकेंड रो और वैल्यू कितनी चाहिए हमें, थर्ड वैल्यू मींस व्हाट 0 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेंगे, 11. सो A of 2 3 we are accessing the element of 11. Okay, so likewise we can accessing the any element from similarly as a one dimensional array. जैसे one dimensional array में हम लोग element randomly access कर सकते हैं, similarly we can access from 2-dimensional array also. Okay, this is a 2-dimensional array. Then we are going to concentrate on 3-dimensional array. Again 3-dimensional मतलब कितने brackets आएंगे, 3 brackets are there, and again we have to clear that concept. 5 10 4 means 5 is the number of rows, number of columns, and 4 will be the value. That point we have cleared previously. Okay, we have seen the graphical representation of cube data structure, उसमें element कैसे store होंगे वो भी part हम लोगों ने क्लियर किया था. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. वी जस्ट रिवाइजिंग फुल एरे. अब तक हम लोगों ने एरे का क्या क्या पार्ट देखा है, दैट वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट टुडे. ओके, सो नो डाउट रिगार्डिंग दिस. किसी को डाउट है? 5 10 4 मीन्स 5 इज नंबर ऑफ रोज, 10 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसमें एक्चुअल जो वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी होगी, 4 total number of elements we are going to store. Okay, so likewise we are going to see this point. मल्टी डायमेंशनल एरे भी देखा था, एंड हम लोग एरे में एरे को एज अ पैरामीटर पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट इन सी मींस वी आर पासिंग द एरे फंक्शन इन एरे इनटू द गिवन फंक्शन. मींस हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन में एरे के एलिमेंट पास कर सकते हैं. दैट इज एग्जांपल आई एम गिवन प्रीवियसली. व्हाट इज मीन बाय फंक्शन कॉलिंग, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन डेफिनेशन, function declaration, and how you are going to call that function. For that purpose I have given one non-technical example. I hope everyone remember this. Okay, I hope everyone clear that point. function क्या होता है वो हमने पहले देखा है. उसके बाद हम लोग फंक्शन के अंदर, फंक्शन मीन्स व्हाट, उसको रिटर्न टाइप होना चाहिए. फंक्शन एग्जीक्यूट इटसेल्फ, उसका एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंटली होता है. फंक्शन के बाद, फंक्शन का नाम के बाद राउंडेड ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट में उसका डेफिनेशन लिखते हैं. ओके, दिस पॉइंट वी हैव क्लियर. सो एरे को एज हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. सो आई होप एवरीवन क्लियर. फंक्शन एवरीवन क्लियर नाउ? नो डाउट? किसी को डाउट है कि फंक्शन मैडम हमें क्लियर नहीं हुआ है? तो एनीबडी क्लियर दिस? यस, आई हैव गिवन वन एग्जांपल फॉर द सेम. क्लियर? Again, you want to explain it? Yes, give me the acknowledgement. Function concept clear हुआ है सब लोगों का? Yes, ma'am. Yeah, need. Okay, no need to explain again. Okay, thank you so much. फिर से explain करूँ? Yes, ma'am. Ma'am, एक बार. Okay, अभी basically I'm going to represent it. Okay, so function का जो part है वो मैं फिर से आपको बताती हूँ. Okay, so this is one part that I need to show here. Okay, just I'm sharing one notepad here so that you can clear that part. Okay, function क्या concept है मैं एक बार फिर से सबको explain करती हूँ. So shall I give one example here, non-technical example? Yes. Yes, dear student. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you so much.
Okay, I'm just opening one document here. Okay, it's starting the office, no problem. I'm just writing here. Okay, so don't concentrate on which editor I'm using. You just concentrate here. Okay, so here let's say one important part is that, let's say मैंने क्या बोला है, हमें function start करना है. Okay, okay, so what is mean by function? That we have to, suppose मैंने क्या बोला, function है. Let's say I'm talking about tomorrow you have farewell party. Is it visible everyone? Yes, ma'am. Is Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैंने क्या बोला, कल आप फेयरवेल पार्टी नहीं होती सेकंड ईयर की, फ्रेशर्स पार्टी होती है ना. आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फेयरवेल पार्टी एंड द स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड ईयर. यस सर नो? आपने भी बोलना चाहिए मैडम हमारी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, हमें फ्रेशर्स पार्टी चाहिए. यस सर नो? यस. ओके, थोड़ा सा बोलते जाओ लेक्चर में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोटोनी लेक्चर नहीं होना चाहिए. आपने थोड़ा बहुत बोला तो अच्छा लगता है. यस सर नो? ओके Yes, ma'am. सो ओके फाइन. ओके सो लेट्स से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे टुमारो वी हैव अ फ्रेशर पार्टी. ओके सो कल फ्रेशर्स पार्टी है और आप लोग कहाँ पे हो? नाउ यू ऑल इन हॉस्टल. ऐसे कंसिडर करो ऑफलाइन लेक्चर हो रहा है और सब लोग कहाँ पे? हॉस्टल पे है. ओके अभी मुझे बोलो कि आप लोग कॉलेज में हो, हॉस्टल में रहते हो, और कल ये डिसाइड हुआ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ड्रेस कोड डिसाइड किया है हम लोगों ने. फॉर गर्ल्स स्टूडेंट कौन सा ड्रेस कोड पसंद है आपको? फॉर गर्ल्स स्टूडेंट One piece. यस वन पीस. ओके फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स ड्रेस कोड दिया है, यू हैव टू वेयर वन पीस हियर. ओके ओके सो ये आपको बोला गया है कि आपको वो पहनना है. ओके एवरीवन इज एग्री विद दिस. ओके वन पीस पहनना है. और बॉयज लोगों को बोला है बॉयज शुड वेयर टाई, कोट एंड टाई. ओके बॉयज क्या वेयर कर रहे हैं? टाई वेयर कर रहे हैं और कोट वेयर कर रहे हैं. ओके बट गर्ल्स कहाँ पे है? हॉस्टल पे है. सो स्टूडेंट को क्या फिजिबल नहीं रहेगा? लेट से मैडम हमारा वो तो घर पे है वन पीस, अभी तो हमने लाया नहीं है, तो क्या होगा? स्टूडेंट सर्चिंग फ्रॉम एवरीवेयर मीन्स हॉस्टल पे कैसे होता है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम लोग जाके पूछते हैं कि आपके पास है क्या, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन टू यू. ओके तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देंगे आपको. मतलब क्या, प्रीवियस पहले डे आप क्या करोगे? उस ड्रेस को पहन के देखोगे. ओके जो लहंगा है और वन पीस है उसको पहन के देखोगे वेदर इट इज प्रॉपरली फिटेड और नॉट. ओके मींस फंक्शन एग्जीक्यूशन के पहले आप लोग क्या चेक कर रहे हो? वेदर इट इज फिटेड और नॉट टू योर साइज. इसका मतलब है टेक्निकल इसमें उसको बोला जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन. और उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, और इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप. आई होप एवरीवन इज एग्री. तो फंक्शन डिक्लेरेशन और उसको क्या बोला जाएगा? फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके सो फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स क्या, वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ सो दैट यू कैन क्लियर इट. ओके फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब क्या? ये देखो कल फंक्शन है, आप सिर्फ लहंगा पहन और वन पीस पहन के देख रहे हो, आपको सिर्फ देखना है कि वेदर इट इज फिटेड और नॉट. आप पूरा एग्जीक्यूशन देखोगे क्या? तुरंत आप लोग वन पीस लेके आओगे आपके फ्रेंड्स से और पहन के देखोगे या उस पे मैचिंग ढूंढोगे? नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर इट इज प्रॉपरली फिटेड और नॉट. सो फंक्शन डिक्लेरेशन में सिर्फ फंक्शन का नाम और उसका डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट से मैंने किया इंटीजर इंट सम नाम का मेरा वेरिएबल फंक्शन है. ओके फंक्शन के अंदर क्या है? दो पैरामीटर्स है. लेट से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे जरूरी नहीं है वो पैरामीटर का नाम क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है. फंक्शन का डेटा टाइप, फंक्शन का नाम तो जरूरी होता है, और उसमें लेट से मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं. वो पैरामीटर है इंट ए कॉमा इंट बी. ओके ये दो पैरामीटर मैंने पास किए. बट यहाँ पे डिक्लेरेशन में मैंने क्या बोला है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड इंट. मैं यहाँ पे क्या पास कर रही हूँ? इंट ए एंड सिर्फ मैं क्या करूँ यहाँ पे? आई डोंट वांट टू गिव द नेम ऑफ दैट वेरिएबल. ओके सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? देखो इंट. ओके यहाँ पे
सपोज मैं फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे कर रही हूँ, इंट नेम ऑफ द फंक्शन दैट सम इन राउंडेड ब्रैकेट, इन राउंडेड ब्रैकेट क्या होगा, ओके वेदर इट इज विजिबल, No, ma'am. No, ma'am. always problems are arises, yes, ओके फाइन, इन सम, ओके उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अभी सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट कर रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, in tab I'm not familiar with tab, that's why this problem is arises, please dear students cooperate with me, okay, int then sum into राउंडेड ब्रैकेट दैट इज इंट, फर्स्ट जो पैरामीटर है उसको क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंट कॉमा इंट, ओके सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैंने क्या बोला, कल फंक्शन है, आपने सिर्फ ड्रेस को पहन के देखा वेदर इट इज प्रॉपरली फिटेड और नॉट। सिमिलरली डिक्लेरेशन पार्ट में देखो, जो फंक्शन डिक्लेरेशन में यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, फंक्शन प्रोटोटाइप जो यहाँ पे दिख रहा है सबको, ओके सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पार्ट क्या है, सिर्फ फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला दैट इज डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो तब जरूरी नहीं होता है कि उस फंक्शन में आपने कौन से वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हम लोग क्या देते हैं, उसको सेमीकोलन देते हैं, ओके तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या देंगे, वी आर गोइंग टू गिव द सेमीकोलन हियर, ओके एवरीवन। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी ये देखो मेरा नॉन टेक्निकल फंक्शन कहाँ तक आ गया, डिक्लेरेशन पार्ट हो चुका है, ओके और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे किया, नेम ऑफ द फंक्शन सेम, और उसके सिर्फ डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी दैट उसमें कौन सा टाइप का वेरिएबल है, सॉरी उसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके अभी सेकंड डे क्या है, फंक्शन है, ओके मान लो अभी कल आपका फंक्शन है, लेट से कल आ चुका है, मतलब आज आपका फ्रेशर्स पार्टी है, फेयरवेल पार्टी नहीं फ्रेशर्स पार्टी, ओके सो आपकी फ्रेशर्स पार्टी है, सो मुझे बोलो आप क्या करोगे फ्रेशर्स पार्टी के लिए, कौन बताएगा, फ्रेशर्स पार्टी आप लोग कैसे करोगे, यस फ्रेशर्स पार्टी में आप क्या करोगे, लेट से आपको वन पीस मिला है ब्लैक कलर का, तो आप क्या करोगे, पूरा मैचिंग पहनोगे, ब्लैक इयररिंग्स एंड द ब्राउन लिपस्टिक एंड ऑल and the sandal also the similar kind of color, okay so पूरा प्रॉपरली एग्जीक्यूशन रहेगा, क्योंकि फंक्शन के दिन आप एक भी चीज छोड़ोगे नहीं, प्रॉपर हेयर स्टाइल एंड ऑल एवरीथिंग विल बी प्रॉपर, ओके दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। हम क्या बोलेंगे उसको, फंक्शन एग्जीक्यूशन, समझ में आ रहा है, उस दिन आपका एक भी पार्ट मिसिंग नहीं रहेगा। सिमिलरली फंक्शन आपने टेक्निकल, इसमें फंक्शन डेफिनेशन जब रहेगा तब सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन मीन्स उसका डेटा टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, देन राउंडेड ब्रैकेट में क्या चाहिए, उसमें राउंडेड ब्रैकेट में क्या आएगा, लेट से दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उसमें, तो क्या आएगा इंट इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसे दो प्रॉपर पैरामीटर्स आएंगे, ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, देन एंटर इट, ओके एंटर प्रेस करोगे, देन करली ब्रैकेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके करली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे यहाँ पे, राइट अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द करली ब्रैकेट्स हियर, राइट एवरीवन, करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें आप क्या करोगे, फंक्शन की बॉडी लिखोगे, यहाँ पे फिर से करली ब्रैकेट क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस, क्लियर एवरीवन, यस एनीबडी, समझ में आ रहा है, मतलब फंक्शन जब एग्जीक्यूशन रहेगा तो आपको सारी चीजें प्रॉपर चाहिए होती है। सिमिलरली फॉर फंक्शन डेफिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट कम्स अंडर इनटू व्हाट, फंक्शन डेफिनेशन, ओके सो फंक्शन डेफिनेशन में सारी चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ओके सो दिस इज व्हाट योर फंक्शन डेफिनेशन, ओके सो एवरीवन क्लियर दिस, फंक्शन डेफिनेशन में सारी चीजें प्रॉपर्ली चाहिए, मतलब नेम ऑफ द फंक्शन, उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें कौन से पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप में जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि एवरीथिंग विल बी properly mention the data type of that parameter and the data type of that एंड द फंक्शन नेम ऑल्सो, ओके फंक्शन नेम एंड फंक्शन पैरामीटर का डेटा टाइप प्लस उसका नाम भी होना जरूरी है, ओके ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। अभी हमारा नॉन टेक्निकल फंक्शन कॉलिंग आ गया, मान लो आई वांट टू कॉल सेजल, सेजल को मुझे बुलाना है,
ओके सो मैं क्या बोलूंगी कि ऐसे स्टूडेंट को बुलाना है जिसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना है, जिसने ब्लैक कलर की इयरिंग्स लगाई है और पहनी है और हेयर स्टाइल इस वे से की है. नॉट नेसेसरी फॉर फंक्शन कॉलिंग. आई एम जस्ट कॉलिंग द नेम ऑफ हर. प्लीज टेल हर दैट आई एम कॉलिंग हर. ओके मैं क्या बोलूंगी, प्लीज टेल सेजल कि मैंने उसको बुलाया. ओके इतना सफिशियंट है. सो सिमिलरली इन आवर टेक्निकल लैंग्वेज मैं सिर्फ सेजल के नाम से उसको बुलाऊंगी, मीन्स आई एम कॉलिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. सिमिलरली हियर इन in technical way, when function calling I am just giving the name of function. No need to data type of that function, nothing. Name of the function मतलब function के अंदर जो पैरामीटर हमने पास किए हैं, ओके फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास किए उसका सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, वी आर जस्ट गिविंग द नेम ऑफ दैट पैरामीटर, मीन्स ए कॉमा बी, और मैंने उसको बुलाया है, दैट्स इट. मेरा कॉलिंग का काम वहां पे खत्म हो गया. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया. नॉन टेक्निकल एग्जांपल देखो, जब मैं सेजल को बुला रही हूँ तो उसका नाम सफिशिएंट है. जब मैं उसको बुला रही हूँ तो वहां पे इतना डिस्क्रिप्टिव देने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसे पहना है, ब्लैक कलर का पहना है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. मैं सिर्फ उसको नाम से बुलाऊंगी क्योंकि लेट से मान लो सेकंड ईयर में सिर्फ एक ही सेजल है तो वो तुरंत आ जाएगी. सिमिलरली इन आवर टेक्निकल वे, नेम ऑफ द फंक्शन और राउंडेड ब्रैकेट में जो हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके उसका भी सिर्फ नाम देना है और सेमीकोलन देना है. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फंक्शन calling. So I hope everyone clear it. Okay, so what is the difference between function prototype, function declaration and function calling and function definition? function prototype में क्या समझ में आप लोगों को, ये एग्जांपल याद रखो. आप लोग फ्रेशर्स पार्टी का लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए सिर्फ पहले दिन क्या जरूरी है कि आपको वो प्रॉपर ड्रेस सुटेड होता है कि नहीं है कि क्या करना है. तो जस्ट गिव द नेम ऑफ द फंक्शन तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उसका डेटा टाइप और अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप रिक्वायर्ड है एंड सेमीकोलन इज गिवन. ओके तो डिक्लेरेशन पार्ट इज खत्म. फॉर फंक्शन डेफिनेशन उसका डेटा टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन में जो डेफिनेशन मतलब ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. ओके तो इसमें फंक्शन के दो पैरामीटर्स है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया है, करली ब्रैकेट एंड किया है, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर. फंक्शन के अंदर क्या आएगा आपका यहाँ पे, इन फंक्शन यू आर राइटिंग फंक्शन बॉडी हियर. ओके सो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, फंक्शन बॉडी भी लिखोगे. ओके we are writing here function body, curly bracket में आप लोग function body लिखोगे, means everything will be cleared on that function. okay and what about function calling? function calling के लिए जैसे I am calling to particular student from the function execution at the time of function execution, तब मुझे क्या जरूरी है, सिर्फ उस पर्सन का नाम. means similarly when we are calling any technical function it requires name of the function and पैरामीटर नेम ओनली. आप क्या करते हो यहाँ पे भी इंटीजर ए इंटीजर बी करते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. फंक्शन कॉलिंग में हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सेमीकोलन देना नहीं भूलना है. but when we are defining the function at that time no semicolon is given, but function prototype and function definition के वक्त डिक्लेरेशन के वक्त सेमीकोलन देना जरूरी है. और हमेशा याद रखो हम लोग फंक्शन मेन में कॉल करते हैं, इधर दूसरे फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं. तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कहाँ से होता है, who will going to tell me where actually our execution will start? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अभी आप लोगों ने C++ में काफी असाइनमेंट्स किए होंगे, राइट? ओके फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन? यस मेन फंक्शन. यस थैंक यू सो मच. हमेशा याद रखो मेन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं क्योंकि कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है. और ये जो फंक्शन है हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, ये फंक्शन का जो कॉलिंग है वो हमेशा हमारा मेन में रहेगा. मतलब ये सम इन राउंडेड ब्रैकेट ए कॉमा बी, ये जो है हम लोग पैरामीटर उसके पास कर रहे हैं. मतलब कंपाइलर का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट मेन से स्टार्ट होता है. फिर ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, उसको इतना ही पता चलेगा कंपाइलर को कि यहाँ पे सम ए कॉमा बी नाम का फंक्शन यूज किया है तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा. सेमीकोलन दिया मतलब उसका काम खत्म होगा. इस सम ए बी इस फंक्शन से वो जंप करेगा कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी है, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा.
इसलिए फंक्शन कॉलिंग हमेशा मेन में होता है, आइदर सेकेंड फंक्शन में उसको कॉल कर सकते हैं. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर द कंसेप्ट ऑफ function definition, function declaration, or we can say that it is a function prototype and function calling. Any doubt now, dear student? Is there any doubt regarding the function concept?